Your Excellency और मेरे मित्र राष्ट्रपति मिर्जी योवेर, उज्बेकिस्तान से आए सम्मानीय अतिथि और मित्रगण, भारतीय शिष्टमंडल के सभी सदस्य, नमस्कार। राष्ट्रपति जी, यह आपकी भारत की पहली स्टेट मीटिंग है। मुझे बेहद खुशी है कि यात्रा आप अपने परिवार और एक सशक्त डेलीगेशन के साथ कर रहे हैं। आपका और आपके परिवार का तथा डेलीगेशन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच समानताएं और नजदीकी रिश्तों के गवाह हमारे साझा इतिहास और संस्कृति है। मेहमान, दोस्त और अजीज, ऐसे कितने ही शब्द दोनों देशों में समान रूप से जाने जाते हैं। ये सिर्फ भाषा की समानता नहीं, यह दिलों और भावनाओं का मिलन है। मुझे गर्व है और प्रसन्नता कि हमारे देशों के रिश्तों की बुनियाद इतनी मजबूत नींव पर बनी है। राष्ट्रपति जी, आपसे मेरा परिचय 2015 में मेरी उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान हुआ था। आपकी भारत के प्रति सद्भावना और मित्रता ने और आपके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया। यह हमारी चौथी मुलाकात है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप एक घनिष्ठ मित्र हैं, अजीज दोस्त हैं। मुझे और भी अधिक प्रसन्नता इस बात की है कि आपके साथ एक सशक्त डेलीगेशन आपके साथ है। आपके आदेश और मार्गदर्शन और पिछले कुछ दिनों में भारत में उनकी उपयोगी मुलाकातें हुई। आज हमारे बीच बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। भारत और उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक संबंधों को और गहरा बनाने और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने के हमारे विजन और प्लान्स को हमने साझा किया है। हमारे पुराने दोस्ताना रिश्तों को आज के संदर्भ में और भी समृद्ध करने के लिए हमने लॉन्ग टर्म व्यू लिया है। क्षेत्रीय महत्व के मुद्दे जिनसे हमारी सुरक्षा, शांति, समृद्धि और सहयोग जुड़े हैं, उन पर भी सार्थक विचार विमर्श हुआ है। इन मुद्दों पर और शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समेत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमने हमारे सहयोग को और गहरा बनाने का निर्णय लिया है। आज की मुलाकात में हम इस बात पर पूरी तरह सहमत हुए हैं कि अब हमारे देशों के बीच के प्राचीन और प्रगाढ़ संबंधों को हमारे लोगों की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप विस्तार देने का समय आ गया है। एक्सेलेंसी, आपके कई साहसी और ठोस कदमों और सुधारों ने उज्बेकिस्तान पूरी व्यवस्था को पीछे छोड़कर आधुनिकता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह आपके नेतृत्व और विजन का परिणाम है। मैं इसका स्वागत करता हूं, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आगे और भी सफलता के लिए मेरी तरफ से 125 करोड़ भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं भी देता हूं। एक्सेलेंसी, अफगानिस्तान की प्राथमिकताओं के अनुसार
भारत उन प्रयासों में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे मौजूदा सहयोग को नए क्षेत्रों में बढ़ाने के लिए हमने आज खास तौर पर चर्चा की। हम व्यापार और निवेश के रिश्तों को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। हमने 2020 तक $1 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का टारगेट रखा है। हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर नेगोशिएशन शुरू करने का भी निर्णय लिया है। उज्बेकिस्तान के प्रस्ताव पर हमने उज्बेकिस्तान के सामाजिक क्षेत्रों में कम लागत के घरों और ऐसे और भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा $800 मिलियन की लाइन्स ऑफ क्रेडिट तथा एक्सिम बैंक द्वारा 22 क्रेडिट के अंतर्गत भी हम उज्बेकिस्तान के प्रस्ताव का स्वागत करेंगे। अंतरिक्ष, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में उज्बेकिस्तान के हित के लिए भारत के अनुभव से लाभ उठाने का प्रस्ताव हमने रखा। भारत और उज्बेकिस्तान के राज्यों के बीच बढ़ते सहयोग का हम स्वागत करते हैं। आज आगरा और समरकंद के बीच ट्विनिंग एग्रीमेंट और गुजरात और उज्बेकिस्तान के अंदीजन के बीच समझौते हुए हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कनेक्टिविटी में वृद्धि करने के रास्तों पर हमने विचार किया है। व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए चाबार के एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत अहमदाबाद एग्रीमेंट का फरवरी 2018 में सदस्य बना है। इसमें समर्थन के लिए हम उज्बेकिस्तान के आभारी हैं। हमें खुशी है कि उज्बेकिस्तान इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल होने पर सहमत हुआ है। एक्सेलेंसी, आपके वरिष्ठ सलाहकार और मंत्री कल गांधी सैनिटेशन कन्वेंशन के समापन समारोह में शामिल हो रहे हैं। महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और शांति के संदेश के प्रति आपके मन में जो सम्मान है, उसने भारतीयों के हृदय को छू लिया। ताशकंद से भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की स्मृति जुड़ी है। शास्त्री जी के स्मारक और लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के रिनोवेशन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। इन दोनों महान नेताओं की जन्मतिथि की पूर्व संध्या पर आपकी भारत में मौजूदगी हमारे लिए बहुत विशेष महत्व रखती है। एक्सेलेंसी, यह प्रसन्नता का विषय है कि हमारे रक्षा संबंधों में वृद्धि हो रही है। आज की मुलाकात के दौरान हमने संयुक्त सैन्य अभ्यास और सैन्य शिक्षा एवं प्रशिक्षण समेत अन्य आवश्यक क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की है। राष्ट्रपति जी, आपसे विचार विमर्श ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि भारत और उज्बेकिस्तान एक सुरक्षित और समृद्ध एक्सटर्नल एनवायरमेंट चाहते हैं। क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए उज्बेकिस्तान के प्रयासों की हम सराहना करते हैं। इसमें भारत उज्बेकिस्तान के साथ हर संभव सहयोग करेगा। स्थिर, लोकतांत्रिक और समावेशी एवं समृद्ध अफगानिस्तान हमारे पूरे क्षेत्र के हित में है। मुझे खुशी है कि इस संदर्भ में हमारे दोनों देशों के बीच नियमित रूप से संपर्क बनाए रखने का निर्णय हमने लिया। सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हमारे संबंधों के आधार स्तंभ है। ई वीजा, पर्यटन, एकेडमिक एक्सचेंज और एयर कनेक्टिविटी इत्यादि विषयों पर आज हमने चर्चा की है।
एक्सेलेंसी, अब हम एक नए दौर की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें हमारे द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयां छुएंगे और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करेंगे। एक बार फिर आपका और आपके डेलीगेशन का स्वागत करते हुए मैं भारत में आपके सुखद और फलदायी प्रवास की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पाशिबा। Thank you, sir. May I now invite the President of the Republic of Uzbekistan to deliver his remarks to the media. Ваше превосходительство, господин Нарендра Моди, уважаемые представители средств массовой информации, дамы и господа. Prime Minister Narendra Modi, dear representatives of the mass media, ladies and gentlemen. Прежде всего, хотел бы сердечно поблагодарить моего брата, премьер-министра Индии, господина Моди, и всех наших индийских друзей за теплый прием и гостеприимство. Above all, I would like to cordially express my gratitude to the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, and to all of our Indian friends for a warm welcome and hospitality. Позвольте выразить глубокое уважение народу Индии, страны с древней историей и богатейшей культурой, огромным политическим, экономическим и интеллектуальным потенциалом. Also, allow me to express my deep respect to the people of India, the country with an ancient history and the richest culture, enormous political, economic, and intellectual potential. Мы высоко ценим достигнутый уровень отношений между нашими странами и народами, которые связаны многовековыми историческими и культурными узами. We do highly appreciate the achieved level of the relationships between our countries and the nations, which are linked and connect to one another with many centuries old historical and cultural ties. Еще раз подчеркну, укрепление стратегического партнерства с Индией – один из важнейших приоритетов внешней политики Узбекистана. I would like to underscore once again, consolidation of the strategic partnership with India stands as one of the most important priorities of Uzbekistan's foreign policy. Итогами наших переговоров, прошедших в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере, стали принятие совместного заявления, подписание важных межправительственных и межгосударственных документов, о котором вы были сейчас свидетелями. Вы знаете, это на самом деле исторический визит и исторически подписанные документы. За всю историю нашего взаимоотношения такого не было. As the outcomes of our negotiations, which have been held in a traditionally friendly and constructive atmosphere, have become the follows. That is to say, the adoption of the joint declaration, signing a very important intergovernmental as well as the interstate documents. And in this very regard, I would like to underscore this visit stands as a historical visit. And the documents which have been signed today stand as a very historical documents. Indeed, in the history of our relationships between the two countries, we did not and we never had such kind of practice before. Мы продемонстрировали обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога, кардинальном расширении торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также продолжение взаимодействия в рамках авторитетных международных структур, как Организация Объединенных Наций, Шанхайская организация сотрудничества. We have demonstrated the mutual interest in further strengthening the political dialogue, cardinally expanding the trade, economic investment, as well as the cooperation in the culture and the humanities, as well as in continuing the interaction between the two countries in the framework of the high-profile international organizations and the structures such as the United Nations Organization, Shanghai Cooperation Organization. Хочу подчеркнуть, наши позиции и оценки по всем рассмотренным вопросам совпадают или близки. Сегодня Индия, будучи одной из крупнейших мировых держав,
принимает активное участие в решении глобальных проблем. Учитывая это, Узбекистан вновь подтверждает свою поддержку Индии, чтобы она в качестве постоянного члена вошла в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. I would like to especially underscore that our positions and evaluations on all issues that we have today considered and addressed do coincide or are very close to one another. At the moment, India, as one of the largest world powers, is taking an active participation in addressing the global problems. While taking these factors into very consideration, Uzbekistan once again does confirm its support of India so that India should join the United Nations Organization's Security Council as a full-fledged and permanent member. В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам координации совместных усилий в борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков. At the course of the negotiations, we have exchanged the views and opinions on issues of coordinating the joint efforts on the struggle against terrorism and extremism, illegal drug trafficking. Мы уделили серьезное внимание общей для нас проблеме продолжающегося конфликта в Афганистане. Наше общее мнение, что нет военного решения этой проблемы. Единственный путь к миру – политический диалог между правительством Афганистана и оппозицией. We have paid a very serious as well as scrupulous attention to the very problem of which are common to us, the ongoing conflict in Afghanistan. This is our common opinion, which is follows, that there is no military solution of this problem. The only way to the peace, this is a political dialogue between the government of Afghanistan as well as opposition. Уважаемые друзья, мы критически проанализировали состояние нашего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Dear friends, we have also critically analyzed the state of affairs in terms of our trade, economic as well as investment cooperation. Последние годы товарооборот составляет порядка $300 миллионов. Надо признать, что его нынешний уровень не соответствует потенциалу двух стран. В этой связи мы отметили, что у нас есть все возможности для наращивания объема взаимной торговли как минимум 2-3 раза, как мой друг господин Народи Моди сказал, что мы должны довести до 1 миллиарда. Это очень большая планка. И на самом деле все переговоры до визита, вот уважаемый мой друг господин Моди сказал, что солидная делегация приехала. И на самом деле члены этой делегации сделали совместно с нашими индийскими коллегами очень многое. И то, что сегодня уже подписано, это говорит о многом. И тот план, который мы перед собой поставили, мы обязательно ее достигнем. For the last years, the trade turnover between the Republic of Uzbekistan and the Republic of India makes up nearly $300 million. And we should be recognizing the very fact that the current level does not meet the potential of the two countries. In this regard, we have underscored the very fact that we have got all the opportunities and the capabilities to extend the volumes of the mutual trade as minimum twofold in the nearest years to come. As my dearest friend, His Excellency Mr. Prime Minister has underscored that it is our plan to get that number up to $1 billion. And indeed, dear colleagues, you can believe this, it's a big plan, it's a big intention for the days to come. And as Mr. Prime Minister Modi has underscored that all of the negotiations that have taken place on the eve of this visit, as well as by the participation and the arrival from Uzbekistan of the high profile, as well as of the solid delegation, and they have done a lot in this direction. And in this very regard, the signed documents that we can confirm the very need as well as the intention of ours to work further ahead to extend the relationships. В ходе нынешнего визита подписаны соглашения и контракты между ведущими компаниями наших стран на сумму свыше $3 миллиардов. Мы договорились содействовать реализации совместных проектов и программ в сферах, отраслях, где наши индийские партнеры обладают передовым опытом и технологиями.
At the course of this current visit, the agreements and the contracts have been signed among the leading companies of our countries worth more than $3 billion, and we have agreed to promote the implementation of the joint projects as well as programs in the spheres and branches where our Indian partners do have the advanced experience as well as the high-level technologies. В частности, это развитие современного сектора услуг. Будет сформирована совместная рабочая группа в рамках межправительственной комиссии. In particular, we are talking about the development of the modern sector of services. The joint working group in the framework of the Intergovernmental Commission shall be established. Создание совместного технопарка с привлечением общества парков программных технологий Индии. Открытие филиалов ведущих индийских университетов в Ташкенте. Also, we are talking about the establishment of the joint technological park with the attraction and involvement of the Society of Parks of Program Technologies of India, as well as the establishment of the branches of the leading and advanced Indian universities in Tashkent. Создание в Узбекистане современных многопрофильных медицинских центров и фармацевтических предприятий. Also, we are talking about the establishment in Uzbekistan of the modern, multifaceted medical centers as well as other pharmaceutical enterprises. Строительство современных гостиниц в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, освоение перспективных месторождений углеводородов и вольфрама в Узбекистане, производство готового текстиля, изделий из кожи и многие другие. The construction of the modern hotels in the cities such as Tashkent, Samarkand, and Bukhara, the mastering of the prospective deposits of the hydrocarbons as well as tungsten in Uzbekistan, and the production of the ready-made textile goods from leather and many others. Кроме того, между нашими ведущими банками достигнута договоренность о финансировании совместных проектов. Мы договорились тесно сотрудничать в сферах развития новых транспортных коридоров и потенциала логистических центров в двух странах. Besides that, our leading banks have reached the agreement in terms of the financing and the joint projects. We have agreed to closely cooperate in the sphere of development of the new transport connectivity corridors and the potential of the logistical centers in both nations. Большой потенциал мы видим межрегиональных контактов. В ходе визита, как вы уже были свидетелем, установлены партнерские отношения между штатом Гуджарат и Анджанской области, историческими городами Агра и Самарканд. We do see the highest potential in the interregional contacts between the two nations. During the course of this visit, the partnership relationships have been established between the state of Gujarat in India as well as Andijan region in Uzbekistan, as much as the historical cities of Agra and Samarkand. Имеются большие возможности для взаимодействия в таких сферах, как образование, наука, туризм, культура и искусство, в том числе кинематография. There are big opportunities for the interaction as well as the engagement in such spheres as the education, science, tourism, culture, and art, including in the cinematography. На переговорах с индийскими партнерами мы договорились о сотрудничестве в области молодежной политики. Первым шагом могло бы стать проведение фестиваля узбекско-индийской молодежи. At the negotiations with the Indian partners, we have agreed about the cooperation in the area of the youth policy. As a first step in this direction could be the holding of the festival of the Uzbek Indian youth. Ваше превосходительство, господин премьер-министр, пользуясь случаем, хочу вручить вам изданное на днях в нашей стране на узбекском языке 8-томное собрание сочинений великого индийского писателя и мыслителя Рабиндраната Тагора. И для меня было большой честью написать предисловие к этому изданию. Пусть это станет еще одним символом крепнейшей духовной связи между нашими народами. Your Excellency, Mr. Prime Minister, I am taking this very fine opportunity. I would like to grant you this 8-volume collection of the essays of the great Indian writer and the thinker Rabindranath Tagore, which has been recently published in our country in our native Uzbek language. It has been a great honor to write the foreword to this collection. Let this collection be a symbol of the solidified spiritual ties between our countries.
В заключение хотел бы еще раз выразить, господин премьер-министр, признательность. Я хочу искренне сказать, что наши сегодняшние переговоры в узком составе и в расширенном составе, они были очень доверительными, открытыми, и я очень удовлетворен нашими сегодняшними переговорами, и я еще раз выражаю искреннюю признательность за такое гостеприимство и прекрасную организацию нашего визита. Большое вам спасибо. In conclusion, I would like to once again express you, Mr. Prime Minister, our appreciation for the hospitality as well as the wonderful organization of our state visit. And in taking this opportunity, I would like to say sincerely that during the tete-a-tete negotiations as well as at the delegation level talks, we have had very trustworthy and open negotiations with our Indian partners. I'm pretty much well pleased of our talks today. Well, thank you very much once again. Thank you, Excellency. This concludes the presentation.